Welcome back guys. अब हम करेंगे practical electricity question 5 paper 2 5054. Let's start. Question 5. Figure 6.1 shows the fuse inside the plug of a hair dryer. So state how the fuse protects the wire in the hair dryer. So fuse का intended purpose क्या होता है कि if too much current passes through the fuse, what happens is that the fuse blows, it melts. तो fuse melt हो जाता है, blow हो जाता है when too much current is passed through the fuse. So yeah, when the current is high, stops current, blows, melts off, cuts off the circuit. ये क्या हो गया? So आगे देख लेते हैं. The hair dryer is rated at 240 volts, 1500 watts. It is switched on. Calculate the current in the hair dryer. So the current in the hair dryer will be calculated using the formula P is equals to VI. काफी formulas है power के, लेकिन we're going to be using P is equals to VI because हमें उसकी values मिली हुई हैं और we have to calculate the current. तो पावर हमारे पास 1500 है, इज इक्वल्स टू वी हमारे पास कितना है 240 इंटू आई हमने निकालना है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 240 will be equals to the answer which is 6.25 amperes, which is the current. Suggest a suitable current rating for this fuse. So the current rating for this fuse will be above the value of 6.25. So above the value of 6.25 ले ले 7 ले ले 8 ले ले 9 ले ले 10 ले ले 11 12 13. So yeah, any integral value between 7 and 13. The hairdryer does not contain an earth wire to connect to the plug. State the feature of the hairdryer that which ensures that it is safe to use without an earth wire. It is because, for example, this is a hairdryer, right? और हेयर ड्रायर के अंदर ऑफ कोर्स तारें भी होंगी. तारों के अंदर अपनी एक इंसुलेशन होती है. अगर ये तार है ना, ये तार की इंसुलेशन है, तो दिस इज गोना बी द तार. ठीक है ना, तारों के अंदर अपनी इंसुलेशन होती है. एंड द हेयर ड्रायर इटसेल्फ इज मेड ऑफ प्लास्टिक. हेयर ड्रायर किस चीज से बना होता है? प्लास्टिक से हेयर ड्रायर बना होता है. सो इट इज नॉट गोना बी एबल टू शॉक अस. और उसके ऊपर से हमारे पास होती है वायर्स विच आर कवर्ड विद प्लास्टिक एज वेल. सो दो दफा इंसुलेशन हुई हुई है. अगर दो दफा इंसुलेशन होगी तो देयर इज नो चांस ऑफ अस गेटिंग इलेक्ट्रोक्यूटेड. So this feature is called double insulation. Outside case plastic body, rubber. Yeah, rubber, plastic body, same thing. So that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.